जय हिंद, जय भारत, and welcome to Dev Talks. This is Aadi Achint. वो दिन आ गया, 100K show has come here, and who better to be on this show than General Narayan, who's going to be who's just coming back. Yeah. Who better to have on the show than General Narayan on this wonderful day of the 8th of November 2023 when we crossed 100,000 subscribers. सबसे पहले तो यार सबको very a big thank you to everybody who has supported me all this while, and सबसे ज़्यादा तो I mean the biggest thing is that you guys have been liking the videos, so it spreads out. And sir, सबसे पहले तो नमस्कार, good evening, and I wanted to ask you, I mean, how was Jaipur Dialogues for you, sir? Interesting Jai time we Bharatam. had there. Yeah, I loved it. I loved every moment of it. In between, I missed a few. I have downloaded that videos and बैठ के मैं धीरे धीरे देख रहा हूँ the sessions which I missed. So to go through कि क्या बात हुई थी. It was so nice to see people not afraid to say that I'm a Bharatiya, or as some people used to say, I'm a Hindu. पहले वो बोलने के लिए डरते थे और हम ओपनली कहते थे लोगों से, यार हम कहीं जाते हैं, कोई मेरे से पूछता है आप कौन हो, आई से आई एम एन इंडियन. बाकी जो बगल में सिविलियंस होते हैं, आप कहाँ से आए हो, कहते मैं पंजाब से आया हूँ, मैं गुजरात से आया हूँ, मैं तमिलनाडु से आया हूँ. किसी के मुंह से नहीं निकलता मैं इंडिया से आया हूँ. It is like you ask a white man, where have you come from? He will either say, I've come from UK or Germany or France or US. He's not going to name his province, that I come from such a province. He names his country. And that is now coming forward, that I am a Bharatiya, or I am a Hindu, or I am an Indian. I come from Bharat, or I come from India. That is evolving, and that I felt very nice to be part of, to see it first. हाँ, कितने लोग मिले सर, so many people met, and it was so nice to actually meet इतने सारे लोग. मैं मजाक कर रहा था यार, पता नहीं मेरी फोटो कहाँ निकलेगी अभी, because there's so many people who click photographs and selfies and this and that. I have no idea कहाँ बाहर निकलेगी वो. Every day I open Twitter and एक आधे ने किसी ने tag किया होता है. It feels so nice because I have never thought कि ऐसा recognition and this and that was not my idea ever, sir. The idea was just to interact and have fun. Platform है तो लोगों को पसंद आया. Fact is there. People came. Yes, congratulations दोबारा से 1 लाख हो गए, और मैंने कहा है मैं 5 लाख is my cut off. After that for you is bonus, which is 500,000. And अगर आगे जाना ही है तो I would prefer 5 million. और 50 लाख तो हिंदुस्तान से ही आ जाना चाहिए. भारत के अंदर से ही आ जाना चाहिए. इतने सारे लोग हैं, आ जाना चाहिए सर. बिकॉज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो मेरे को लगी सर, एंड कमिंग टू आज का थोड़ा सा डिस्कशन करना है जो मेरे को, छोटा सा, ज्यादा नहीं, उसके बाद थोड़ी मस्ती करेंगे. एंड आई विल आस्क सर अबाउट हिज व्यूज कि डेफ टॉक्स कहाँ जाना चाहिए. दैट इज द क्वेश्चन. क्योंकि देखिए, इंडिया दैट इज भारत का जो मैंने एक सब्जेक्ट रखा है, एंड जियोपॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्न इंडिया. ठीक है, आज का जो भारत है हमको पीछे से लेना है, क्या करना है. सो डेफ टॉक्स को क्या देखना चाहिए आगे जाके, what should we all look at, हमारी not just the channel but the community as well. कैसे लोगों को अभी एक अपने लिए नैरेटिव क्रिएट करना चाहिए, और क्या क्या चीजें हमको अपने दिन में अपनी क्या नाम है, अपनी जिंदगी में लेके आना चाहिए. दैट इज द मेन क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग सर. कि हम लोग एक जगह पे आके खड़े हुए हैं सर. जब तक हमारे एक सबसे ज्यादा चीज जो आजकल नोट की जाती है भारत में, दैट इज द कॉन्फिडेंस ऑफ भारत. कि हम एक जगह पे खड़े हैं जहां पर पीपल आर कॉन्फिडेंट, पीपल आर गनिंग विद एनर्जी. उसका कोई डाउट नहीं है. अब वो एनर्जी को किस तरह से चैनलाइज करें ताकि हम रोड साइड वॉरियर्स ना बने एंड एक्चुअल रियल वॉरियर्स बने.
So these are 3 4 things I wanted to discuss. And guys, aapke bhi, I want you guys also to ask. So we will just take about another 10 minutes in this discussion. Uske baad ask questions about, I mean, me and sir have these lengthy discussions about various different things. So it'll be nice to actually just have an interactive sort of a session. And so take it away, sir. What do you think? Hum as Bharatiya, what should we do and imbibe in our life today onwards? Firstly, what we need to imbibe is to understand where we come from. ये सनातन धर्म है क्या? लोग इसको काफी ट्विस्ट और झूठ इसमें से निकाल के आपको बताते हैं कि भारत का हिस्ट्री या भारत जो हमारे सनातन धर्म में क्या लिखा हुआ है. और सबसे पहले चीज है जो गलत ट्रांसलेशन है धर्म और रिलीजन का. धर्म इज नॉट रिलीजन, बिकॉज धर्म इज अ वे ऑफ लाइफ. जैसे हम बोलते हैं और इवन वर्ण इज अ वे ऑफ लाइफ. क्या मैं ब्राह्मण हूं? ब्राह्मण खानदान में मैं पैदा हुआ हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्षत्रिय हूं. बिकॉज आई एम अ सोल्जर, मैं क्षत्रिय हूं. और क्षत्रिय का आप एक चीज बोलते हैं छात्र धर्म. तो क्या आप कहने को बोल रहे हैं कि हिंदू में जो क्षत्रिय होता है उसका रिलीजन अलग है? नो. छात्र धर्म, हर एक ब्राह्मण का धर्म होता है, ब्राह्मण का, वैश्य का धर्म होता है, शूद्र का धर्म होता है. हर चीज का धर्म होता है. मतलब किस तरह से उसको जीना है और उसके ऑब्लिगेशंस क्या हैं. छात्र धर्म है जो वीक हैं और जो प्रताड़ित हैं उनकी रक्षा करना और देश की रक्षा करना. ये आपका छात्र धर्म है. अगर आप देख रहे हो रास्ते में कोई किसी को यातना दे रहा है तो आप जाओ, रोको, पूछो क्या है. ये है छात्र धर्म. ओके. तो धर्म इज अ वे ऑफ लाइफ एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सनातन धर्म. और जरूरी नहीं है कि अगर आपका एक सिचुएशन आया आज की तारीख में, सो लेट अस से time today is X and you face a situation X at a time A today, your answer is Y and you feel happy about it. क्योंकि हमारा धर्म कहता है कि वो कार्य करो जिससे आपका कॉन्शियंस प्रिक ना, अंतरात्मा आपको चुभे. अगर अंतरात्मा चुभ रहा है मतलब आपने गलत किया. If you face a similar situation X, but the time is sometime away B, आपके अराउंड एनवायरमेंट बदल गया. Is it not necessary that you might respond with X? You might respond correctly with Y or Z or P or T, anything else. तो ये पत्थर की लकीर नहीं है कि हर दफा आपने ऐसा ही करना है. धर्म इज नॉट अ सिंपल थिंग. इस पे कई कमेंट्रीज लिखे हुए जो अंग्रेजों को समझ नहीं आएगा क्या है. उनको समझने में काफी स्पिरिचुअल ग्रोथ लगेगा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड. नंबर 2, मैच्योरिटी. यस, जोश है. हम फौज में भी यही सीखते हैं, सिखाते हैं. जोश माइनस होश इज वेस्ट. जोश में होश मत खोना. यस, जोश में होश नहीं खोते. होश नहीं खोना मतलब मैच्योरिटी से आपको रिस्पॉन्ड करना आएगा. एज नेशंस कम, अभी तो 75 साल ही हुए हमको इंडिपेंडेंस होके. जो पुराने जमाना था वो खत्म हो गया. आप अब उभर के आ रहे हो 800 साल के कॉलोनाइजेशन से बाहर. सो एज nations go, you're still a child, but you got to start learning to become mature. जल्दबाजी में कोई काम नहीं होता. अब देश एक ऐसे कगार में खड़ा है कि हमें तैयार होना चाहिए आम के पेड़ बोने के लिए. मतलब क्या?
आम का पेड़ जो किसान बोता है ना, वो फल उसको नहीं मिलता है, उसके बेटे या पोते और नातों को मिलता है। समय लगता है आम के पेड़ को बड़े होके फलने के लिए, तब तक वो शायद किसान जिंदा ना हो। आज जो आप इसी तरह के अपने देश को ताकत बनाने के लिए जो कदम लेने वाले हो, इसका फल आपके बेटे, पोते, नाते उनको मिलेगा। ये ना सोचो कि मुझे क्या मिल रहा है। जिस तरह से धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस खड़ा किया था, सारा कुछ तो वो भुगते नहीं थे ना। फल कौन भुगत रहा है? उनके बेटे, और ज्यादा उनके पोते और नाते। पोते, लड़के ही दो थे, उनके पोते जो हैं वो फल भोग रहे हैं, पोते पोतियां। ये समझा कर देश को उभारने और सुदृढ़, सक्षम और ताकतवर बनाने में हम जो काम करते हैं अभी, उसका फल आगे चल के मिलता है, इमीडिएटली नहीं जी। मिलता। और यू आर बिकमिंग द फल्क्रम ऑफ द एमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर। तो चैलेंजेस बहुत आएंगे। ये वो पीरियड है जब देश को चैलेंजेस बहुत आए, क्योंकि आप अब स्ट्रेटेजिकली अपना डिसीजन खुद लेने वाले हो। आप देख लो, जब जैसे यूक्रेन की लड़ाई हो रही थी, तो दोनों पुतिन और जेलेंस्की आपसे बात कर रहे थे, आपसे सलाह दे रहे थे। चीन तो कूद के जा रहा था, आप ही आपको जाने की जरूरत नहीं थी, वो आके कॉल करते थे आप। ठीक है, अब गाजा में हमास और इसराइल का लड़ाई हो रहा है, नेतन्याहू आपसे बात कर रहा है, यूएस आपसे बात कर रहा है, पुतिन आपसे बात कर रहा है, यहां तक कि ईरान भी आपसे बात कर रहा है, क्योंकि वो खुद समझ गया कि मैं कितना गलत फंस गया हूं चीन से बात बोल के, करवा के। जो छोटे मोटे चल रहे थे वो तब तो ठीक था, कुछ ना कुछ हो जाता, अभी तो बिल्कुल ही स्यापा हो गया, हमास तो खत्म है। तो उसके दो फौज में से उसने जो खड़ा किया था और तीसरे को तो हेल्प दे रहा था, होती तो ज्यादा कुछ है नहीं। मेन उसके हमास और हिजबुल्ला थे, हमास तो खत्म। तो आपसे क्यों बात कर रहा हूं? चीन कूद रहा है कि मैं करूंगा, ये करूंगा, लेकिन कौन सुन रहा है? क्योंकि आप पे आज इस कगार पे हो कि भरोसा है आपके ऊपर। ट्रस्ट बहुत अहम चीज है, इसीलिए जो कुछ भी ज्यादा बातचीत होती है, आप देखो अपने प्राइम मिनिस्टर खुल के आके प्रेस में कुछ बता नहीं देते क्या बात हुई। नहीं कर सकते सर, नहीं नहीं करना, कर करना सकते, नहीं चाहिए। बहुत ये गड़बड़ हो भरोसा जाएगी। चीन में है नहीं ना। वो जैसे ही थोड़ा कुछ बात करता, उसके तो ग्लोबल टाइम्स में सब कुछ निकल आता, अगला साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट पे आ जाता है। ऐसे थोड़ी डिप्लोमेसी होता है, वो भी इमेच्योरिटी को दिखाता है, और ये मेच्योरिटी। तो आपके अभी पॉलिटिशियंस जो और डिसीजन मेकर्स हैं, मेच्योरिटी दिखा रहे हैं। हम भी मेच्योर होने चाहिए चैलेंजेस को फेस करने के, क्योंकि सब तरफ से चैलेंज आएगा आपको, पाकिस्तान की तरफ से, चीन की तरफ से, चीन वाया नेपाल, बांग्लादेश में भी जो वोक लेफ्टिस्ट हैं, अभी भी स्टेट डिपार्टमेंट में वो कोशिश कर रहे हैं कि हार्डलाइन गवर्नमेंट आए। वो हैप्पी नहीं है ना, क्योंकि जैसे ही ये चेंज होके इंडिया आ जाएगा एज अ फलक्रम, लेफ्टिस्ट का जमाना खत्म हो जाएगा, उनको कोई पूछेगा नहीं। फिर क्या करेंगे वो? इस्लामिस्ट को भी कोई नहीं पूछेगा। अब तो कोई पूछने भी नहीं वाला, क्योंकि हमास तो खत्म हो गया, हिजबुल्लाह को अकल आ गई है कि भाई मैं आई राइडिंग द रॉन्ग हॉर्स। तो ये चारों चैंपियन जो है ना, टर्की, कतर, ईरान और चाइना, अब बैकफुट पे बहुत बुरी तरह चले गए। लड़ाई जो है अगले 4-5 दिन के अंदर खत्म हो जाए। वो उनके मेन हेडक्वार्टर तक पहुंच गए होंगे, पहुंच गए सुबह तो हैं। 800 गज दूर थे, पहुंच गए होंगे। बॉम्ब अटैक, एयर अटैक्स ऑलरेडी, अल शिफा हेड हॉस्पिटल जिसके नीचे उनका हेडक्वार्टर्स था, वहां पहुंच चुका है। अब आएगा डिप्लोमेटिक डिसीजन मेकिंग।
कि ये टू स्टेट, विच इज द सेकंड स्टेट, वेयर विल दिस सेकंड स्टेट बी, किस तरह से करोगे, बिकॉज स्टेट बनाने से कुछ नहीं होता है. State has to have that capability to exist as a state and be recognized as a state and live independently to some extent कि अपना economy finances manage करे. उसके लिहाज से कहाँ बनाना चाहिए. मजा आने वाला है मतलब लाइफ में भी. Yeah, that is why Netanyahu said it will take time, and that is why for that period he said भाई साहब गाजा से मैं निकलने नहीं वाला हूँ. तो गाजा भी अगर वो कह रहे हैं निकलने नहीं वाला है, इज मीनिंग ओनली गाजा सिटी. तो देयर इज अ लॉट ऑफ कोई चर्निंग भरोसा व्हिच नहीं इज सर, नाउ. उसने अभी हाँ एक हिंट सा छोड़ा है, कोई भरोसा नहीं, मीडिया के लिए छोड़ा हो नहीं नहीं, कि when he says Gaza can also mean Gaza city, the area where is IDF has gone in. वादी गाजा के नीचे तो कोई फौज गई नहीं है उसकी, वहां तो केवल एयर अटैक कर रहा है. वादी गाजा के नॉर्थ है, वादी गाजा है, उसके नीचे वादी अल शल्का करके है एक और वादी, और उसके नीचे खान यूनिस और सारा जगह है. सारा उन इलाकों में तो गए नहीं अभी तक. ओके, सो it has a lot of repercussions with you. The more you start coming forward now in the discussions and people start trusting you and calling you for talks, your people for talks, for discussion की क्या होना है. चाइना ने तो चुपचाप नहीं बैठना है, ये लेफ्टिस्ट ने चुपचाप नहीं बैठना है, ये इस्लामिस्ट ने चुपचाप नहीं बैठना है. आपके अंदर अभी इलेक्शन सीजन हो रहा है, देयर आर लॉट ऑफ फिशर्स इनसाइड. वो कोशिश करेंगे इस फिशर्स को बढ़ाने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए. सो वी हैव टू शो मेच्योरिटी कि उनके नैरेटिव में हम फंसे नहीं. मोस्ट इम्पोर्टेंटली सो सबसे बड़ा मैसेज आई थिंक एज अ स्मॉल लिटिल कम्युनिटी इन दिस कंट्री यही होना चाहिए कि यार थोड़ा फैक्ट चेकिंग में हम लोग अपनी हाथ लगाएं. वी शुड बी एबल टू स्टार्ट लुकिंग एट स्टफ, थोड़ा सा देख के परख के. मैं जैसे बोलता हूँ ना, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की डिजीज नहीं होनी चाहिए. वो सो दैट इज वेरी सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट. में वो सबका होता है फास्टेस्ट फिंगर हाँ, फर्स्ट की, मैंने भेजा है. आराम से. तभी आप लोग बोलते रहते हो मालदीव्स का शेयर करो, बांग्लादेश का करो. सी बांग्लादेश का अभी 3-4 दिन पहले हुआ था. मेरा अभी भी रिसर्च चल ही रहा है उसका, और मेरे को 3-4 दिन और लगेंगे बिकॉज देयर इज अ टन दैट आई वांट टू रीड बिफोर आई कम आउट एंड से समथिंग. ये चाइना हमास का जो आज शाम को किया था, दैट इज बीन देयर फॉर 3-4 दिन से कर रहा हूँ मैं उसको. नाउ आई हैव प्रेजेंटेड इट टुडे. सो ये एक रात की रिसर्च नहीं करनी. सिट बट डाउन, ऑल्सो रीड देख लो स्टफ. ना, मालदीव्स का ही इज कॉल्ड यू, ही इज इनवाइटेड यू फॉर हिज सेरेमनी. He hasn't invited China, he's क्योंकि सर invited you. देखो यार, ऐसा है, मैं वही बोल रहा था कि एक ना सिचुएशन को खुलने दो. इट्स लाइक अ स्मॉल लिटिल फ्लावर. अब वो बड होता है, उसको खुलने दो थोड़ा सा. लेट द फ्लावर ओपन अप. फिर देखेंगे उसमें स्मेल है कि स्टेंच है. हो तो कुछ भी सकता है. और तो कितने चलो सर, थोड़े पेटल्स निकलते हैं. कितने पैटर्न निकलते हैं. लेट्स टेक दीज क्वेश्चंस. इतने सारे, आई गॉट अबाउट 25-30 पीपल हु वांट टू से समथिंग और आस्क समथिंग. या सो आज जरा इंटरैक्टिव सेशन करते हैं. लेट्स हैव सम यस फन विद आवर ऑडियंस टुडे. सो गाइज, आई एम गोना स्टार्ट अप. जाने से पहले मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहता है यार, लाइक कर दीजिए वीडियो को, बस दैट्स ऑल. लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब एंड स्प्रेड इट इवन फर्दर, ताकि ये मतलब हम लोग इस जर्नी को और भी आगे बढ़ा सकें. एंड मैं आपको सही में बता रहा हूँ, जब ये अप्रोच टू द 1 लाख मार्क, सर ने तो देयर आर डेज वेयर आई गेट अबाउट 700-800 सब्सक्राइबर्स अ डे. ठीक है, लिटरली एवरेज वाज अबाउट 476 टू 525 सब्सक्राइबर्स अ डे मेरे को आते थे. पिछले 4 दिनों में सर मैंने 500 सब्सक्राइबर लिए हैं. ठीक है. सो नाउ बोलते ना, तड़ा है. जितना जितना पास, सर आज ही 600 सब्सक्राइबर्स ऐड हो गए हैं. वही बोल रहा हूँ ना, सो हमारी दुआएं तेरे यार. 600 क्या, 1000 2000 हर दिन बढ़े यार. वो यू कैन इमेजिन दैट इट इज अ फ्रस्ट्रेटिंग ब्लडी वॉक. द लास्ट वन इज लाइक कि भाई अबे हो जाए यार, हो जाए यार, खत्म हो जाओ अभी. इसीलिए तो हर चीज में बोलते हैं लास्ट माइल कनेक्टिविटी. तो सुबह क्या हुआ सर, आई वोक अप, ऐसे चलो देखा मैंने 99,100 कुछ था. मैं बोला चलो ठीक है, डैम गुड.
हो जाएगा जल्दी से। अब वो शुरू हो गया धीरे धीरे, 99,900 था, सॉरी, धीरे धीरे 10, 15, 20, 25। सो आई वेंट टू वर्क। मैं चलो काम तक में हो जाएगा, नहीं हुआ, लंच टाइम हो गया, खत्म। मैं यार ये क्या हो रहा है, 100 सब्सक्राइबर्स। एंड इट जस्ट लास्ट मोमेंट में मैं, आई वाज वेटिंग ये खत्म हो जाएगा फिर मैं अपना शो स्टार्ट करता हूँ, ऐसे बंक इट, आई एम स्टार्टिंग माय शो। मैंने पूरा प्लान करके रखा हुआ था, आई स्टार्टेड माय शो एंड शो जैसे ही शुरू करा वो इट जस्ट क्रॉस्ड। So that was a very Wow. interesting thing that the crossing also happened during the During your show. show only. I think Maitri was the first one who picked it up. She said, "Sir, ho gaya. Oh, 100,000 is lovely. done." So then I looked back and I said, "हाँ यार हो गया." So that was an amazing experience, and I never thought जब मैंने ये चीज खोली थी कि ये कहाँ पर जाके खड़ा होगा। इस सर के साथ Good. आई रिमेम्बर मैंने पहला एपिसोड किया था, was on China की हिस्ट्री। I don't know how many of you have seen those episodes, but please watch. I mean, 1.5 साल पुरानी है and we've been talking ever since. And trust you me, one of the people who's guided me quite a bit about various subjects. मैं जब भी अपने आप वो करता हूँ, क्या नाम है, सोलो करता हूँ, 90% of the times I send him the presentation. Sir, देखो थोड़े, give me some suggestions, because इतना सारा information collate करने के बाद sometimes you also get confused. बोलना क्या है? What is the this thing? So I take sir's help. So it's always, I'm very grateful to sir that हाथ रखा हुआ है सर ने कि it's नहीं, चलते वही रहो। चीज जो तूने वहां पे भी बताई थी जयपुर में, औरों को घोड़े को पानी तक लाया जा सकता, हाँ पानी सर, घोड़े ने पीना। नहीं नहीं वो तो है सर, एब्सोल्युटली। एंड इट वाज सो नाइस मीटिंग सो मेनी पीपल। आई विश वी कुड मीट मोर एंड someday, यू नो यस, आई आल्सो सी कि भाई हम भी एक कुछ समिट समिट करें कभी। लेट्स सी। सो एनीवेज, लेट्स दैट गेट विल इनटू बी द द क्वेश्चंस डे, गाइस। दैट विल बी द डे सर, दैट विल बी आई द नो। डे। यस, लेट्स सी हाउ लाइफ टेक्स अस। गौरव, सबसे पहले आपका सवाल ले लेते हैं सर। हर्ड द न्यूज अबाउट आईएमएफ गिविंग अनदर $700 million to Pakistan, so USA again, 2.7, 700 million। हाँ, so USA again try to frame the anti-India agenda. 700 मिलियन से क्या होगा? इट्स जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन। नहीं, वो इलेक्शन फंड होगा सर। अभी इलेक्शन करने वाला, आई थिंक डेट अनाउंस कर दिया है फरवरी में सम टाइम पे। हाँ हाँ, हाँ, डेट ही है उसके। नवाज शरीफ पे पूरा छोड़ दिया, तो इलेक्शन क्यों कर रहे हो यार? हमें पता ही है नवाज शरीफ अगला प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है। उसका सब कुछ चार्जेस ड्रॉप हो गया, सब ऐसे ही चेंज कर हो दो गया। यार, तुम ऐसे ही पैसे वेस्ट करते हैं लोग। व्हाई आर यू वेस्टिंग मनी? बुरी बात है, वेरी बुरी, सेंड बहुत द बहुत नेम बहुत एंड से बुरी बात। भाई नवाज शरीफ है, एंड ही विल सेलेक्ट हिज कैबिनेट एंड ही विल सेलेक्ट हिज एमपीज, एंड कौन होंगे कौन नहीं होंगे। उसी तरह बाकी Yes, पॉलिटिकल पार्टीज अपने एमपी सेलेक्ट कर लो और भेज दो। sir. वेस्टिंग मनी, बट 700 मिलियन इज नथिंग। Erin, congrats, Adi. Thank you so much for your contribution and thank you for your wishes. Research and analysis wing. I remember this gentleman. We met him. He यस came यस, and ही said मेट also, मी। na. मेरा या नाम ही research मेट and मी। analysis. Honor to meet you, Adi bhai. Thank you so much. And thanks for Anyway, your contribution. next time we will surely spend some time. Sudhish Casey, thank you so much for your contribution. Uh, Indy Gal, I've seen you after a while. Indy Gal, thank you so much. Yes, it was a fantastic experience. Most importantly, met so many people and ground feedback mila yaar. I mean, that is something now Yeah, professionally speaking, sir. Ground feedback mila कि it भाई was तुम a लोग कर ground रहे हो जो feedback from people coming and meeting you, chatting with them, discussing with them. That was a better experience. one learning that I got, sir, where I mean, I would say almost 70% of the people who met me said एक चीज बोली लोगों ने कि यार जो प्रेजेंटेशन बनाते हो ना, मजा आ जाता है वो देख के। So I said, Yes. okay, I always thought कि प्रेजेंटेशन वाला बोरिंग होगा फॉर्मेट, बट आई कंटिन्यूड विद इट बिकॉज आई वाज कंफर्टेबल विद इट। लेकिन एक चीज समझ में आई कि लोगों को वो पसंद आया। एंड अ लॉट ऑफ पीपल केम एंड टोल्ड यू आल्सो कि सर वो प्रेजेंटेशन Yeah. बनाते हो मजा आ जाता है देख के। क्योंकि उनको पता लगता है ना कि कुछ मेहनत गई है बात करने से पहले, ऐसे ही नहीं बात कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं अपने मेहनत का रिजल्ट की क्या है। जी जी। जेबी थैंक यू सो मच, बधाई आदि प्रणाम मिलिट्री ऑफिसर्स से जो हमसे बात कराते बात हैं। करते हैं। थैंक यू ट्रस्ट यू मी सर। सर, this is it's such an honor to speak to अच्छे लोग, and I've been able to garner a good panel.
जो सेंसिबल बातें करते हैं, एंड इट्स अमेजिंग। एवरीबडी, जनरल दुष्यंत है, रेगुलर कर्नल अजय रायना है, आप तो सामने बैठे हो सर, और क्या बोलूं। मार्शल बेदी हैं, एडमिरल अनूप सिंह, so many people are there, General Shaukin is there, General Lata Hasnan is there. They've all been very balanced on the platform, and everybody's given fantastic views. uh, but it's really amazing to फौजी जब have. भी आएगा ना, वो जल्दबाजी नहीं कर सकता, हाँ, क्योंकि जब you face a situation in battle, you can't make a decision in hurry. Lives of so many soldiers is at stake. आपकी एक गलती से पता नहीं कितने लोग मारे बैंड जा बज सकते। जाएगी। Shri Harshaji, thank you so much. He says, "Sir, world has identified the real problem. Do you believe if their lives made better, they will stop terrorism, or they will use facilities to develop much better to weaponize weapons to annihilate us?" श्री हर्षा सर, आपने सही पकड़ा है। जो पूरे क्वेश्चन में आपने पूछा है, सही पकड़ा है, क्योंकि ताली दो हाथ से बजती है। मैं एक फैसिलिटी दूं, उसको वो कैसे इस्तेमाल करे? आपको सही, आपने लास्ट में क्वेश्चन पूछा ना कि फैसिलिटी दें तो वो क्या करेगा। अभी आप देख लो, 2005 में हम ये गाजा स्ट्रिप छोड़ के गए हैं, 2007 से हमास वहां पे पावर पे बैठा हुआ है, कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स गए हैं वहां पे, और देख लो हालत क्या है। और वो केवल हथियार बनाने में सारा कुछ लगा, और नॉट जस्ट हथियार, स्किम करके जो लीडर्स हैं उन्होंने सारे अपने अपने बिलियनियर्स और पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ खोटियां ये खोटियां बना रखी हैं। कोठी नहीं, खोटियां, क्योंकि वो खोते हैं। कितने देर पैसा लास्ट करेगा? एंड हाउ लॉन्ग? अपने सिखलाई में हमें बचपन में सिखाया गया था, मॉरल साइंस में, इजी कम इजी गो। जो मेहनत करे बगैर चोरी से पैसे आता ना, वो टिकता नहीं है, हाथ में जाता, निकल जाता। So you posed the right question. That is the thing that you have to see, how you are going to make sure that they use it to। अब जिसको बचपन से सिखाया जाए कि यहाँ आप बिल्कुल तहस नहस कर दो, जन्नत में आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो बचपन से तो उसने वही सीखा है कि यहाँ तो मैंने मारना है और मरना है, क्योंकि मरने के बाद मैं जन्नत जाऊंगा, वहां सब कुछ मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। उसको सिखाया नहीं है ना बचपन से, मेहनत करोगे तो यहाँ पे सारा फल भोग सकते हो आप ना, वो नहीं सिखाया। तो वो सिखलाई चेंज करना है, एंड इट विल बी अ मल्टीपल जनरेशनल शिफ्ट बिफोर यू कैन सी समथिंग डेवलपिंग, improvement in their thought process. Shikhar Ramanji, thank you so much for your contribution. Gurmeet Madan, thank you so much, brother. He says, Jai Hind, Major General Rajiv Narayanan sir and Aadi. This channel has become so addictive. Your research is very productive and meaningful. So, love all your insights. You're my new Arnab Goswami. अरे भाई Okay. भाई, I hope I गुरमीत take that as a compliment, मदान brother. जी, ये तो आप तो लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट देख रहे हैं। अर्नब गोस्वामी तो किसी को बात नहीं करने देता, चीखता रहता नहीं है। नहीं आदि तो ऐसा नहीं करता यार, he handles you all in a mature way. आई होप यार, मैं इतना कभी कभार ठीक है, बट आई डोंट कट ऑफ पीपल यार। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स इन दिस प्लेटफॉर्म कि हम किसी को रोकते नहीं है, जो बोलना है बोलो, कोई टेंशन नहीं है। इवन इफ पीपल थिंक इट्स रॉन्ग, सो व्हाट, इट्स एन ओपिनियन, टेक इट and think about it, and figure out if you want to actually stand by it or critique it, or what is it. Sometimes people react with so much emotion ना सर, मेरे को बड़ा Yeah, मजा आता है। मैं बोला यार, इमोशन तो इतना ठीक है, बट relax, it's an opinion. Even if you don't stand by it, it's okay, doesn't matter, it's an opinion. Ashish Swarupji, thank you so much for your contribution. Have you ever met Field Marshal Sam Manekshaw? Please share an untold story about him, why media never spoke about him. Gonna long watch long ago, him Gulzar Swarup movie. ji, long ago, 87, I was doing my junior command course in Mao. He had come to give a leadership talk, and then we had an interactive session and lunch with him in our mess.
while we were doing our course. तो वही बातचीत हुई थी that was the only time I met him. And it has, yeah, he was a wonderful speaker, excellent speaker, and a fantastic leader. Fantastic leader. That is without doubt. And like, people still revere him for what all he achieved Yeah. and did. They still revere. So I won't know much of his stories because that was the only interaction I had. और हम तो जूनियर थे, सीनियर ऑफिसर्स, ब्रिगेडियर्स, मेजर जनरल्स को बतेरे घूम रहे थे उनसे बात करने के लिए. हम तो सुन रहे थे खड़े होके, imbibing what he's saying. I had how much, about 9 years of service. ऐसे लोगों के सामने ही खड़ा हो जाए काफी है सर. I mean, 8 years of service. About yeah, eight great and a people. half years of service. And he had his head on his shoulders. He knew what he was doing. Yeah, he never In had the his head in last cloud. day, he knew क्या है, क्या है, क्या है, क्या है. No left, no right. Tak, I know what I'm doing. खत्म कहानी. Adinath Tapkeji, thank you so much. He says unknown gunman should do घर की सफाई also. ये सवाल ना, आई एम नॉट जोकिंग, ये सवाल तो आई थिंक आपसे भी पूछा ना किसी ने कि Yeah. अननोन गनमैन का क्या होता है. I just laugh. दिस इज लाइक द बिगेस्ट क्वेश्चन इन भारत टुडे. हमारा देश के अंदर सबसे बड़ा सवाल वो यही तो है, ये है कौन भाई. जो भी है यार, मैं तो बोलता हूँ अगली बारी कहीं जाओ उसके नाम से कहीं पे दान कर देना कि भाई जो भी है अच्छा कर रहा है, जय हिंद जय भारत, उसके नाम से थोड़ा सा दान कर दो, ताकि उस जो भी आदमी है, औरत है, ऊपर वाला है, क्या है मुझे नहीं पता, he should get some good wishes from our side. The trickster, thank you so much. He says, was brilliant meeting you both and getting suggestions. Would love to meet you in person for a cup of coffee. Hope to see you in the next event. I am not sure who you are, Mr. Trickster, but I'm sure it was a pleasure meeting Hope you as you well. don't trick us when you meet us next. Yeah. Shikharji, thank you so much for your contribution. Oh, George Soros के नए spelling आ गया अभी. He's really sad. Thank you so much. He says, why China feels it's the fulcrum of geopolitics. It doesn't Emperor feel. That's what syndrome? has been. China doesn't feel. The CPC thinks it is, because ancient times the Middle Kingdom was basically the kingdom behind the walls of the Great Wall of China, and to the east, whatever was Japan and Bohai Sea, North Sea, Japan, South Korea, their reach was there, and they thought that was the world. और कुछ तो किसी को उनको पता भी था नहीं, अता पता लापता. अब उसी को एक्सपैंड करके, इफ यू फील दैट यू आर द फुलक्रम ऑफ जियोपॉलिटिक्स, वेल, गुड लक टू यू यार. You had a chance. You had a brilliant chance given to you on a platter when the US and West made you the manufacturing hub of the world. Yeah. Then you became greedy. Okay, the real George Soros is saying, this is I'm the real one. भाई आपस में डिसाइड कर लो. हमको नहीं पता यार, आधार कार्ड है तो दिखा देना. या बिल्कुल, पता इंडिया में चले, तो आधार कार्ड चलता है यार. अब वो पता लोग चले कहते हैं फॉग के ऐड में कि इंडिया में फॉग चलता है. ना जी, इंडिया में आधार कार्ड चलता आधार है. चलता है. Pavani ji, thank you so much for your, acha, okay, trickster, I know now who it is. Okay, thanks, man. I didn't know it was you. Pavani ji, thank you so much for joining in. Reena ji, thank you so much for your Oh, contribution. Shagun, thank you. Research and analysis wing, once again, thank you. To your yeah. question, as a community, we must work towards finding and discussing solutions. Questions have prevailed. Exactly what Questions we तो discussed in है. the parking lot that day. Yeah, you have the questions. Now we must find options and start talking about the options and not talk in semantics कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. नहीं, आप ऑप्शंस के साथ डिस्कस करो ना, प्रोज एंड कॉन्स. Absolutely, sir. Average middle class gamer, thank you so much. Congrats, Adi, also to General Ryan. All of our veterans coming and teaching us. This IS and Hamas war has told me that how much people hate Jews and anti Semitism, especially in the West, nauseating. West is going to regret this.
Not the West. It is the leftists, extreme leftists. Not the West, but the rest will. Yeah, it is the extreme leftists who have Yeah, yeah. joined hands with the anti-Nazis and all these people. That's the whole case now. Because you joined up जी, with the Islamists, so you had to join up with the anti-Jews, the anti-Semitists. जी, जी. They will pay. Ashutosh, thank you so much for your contribution. KSV Prasad ji, Rajiv Narayan Garu, has anyone ever even thought to do a research on nuclear absorption after an explosion? Is there any reference in our ancient text? Thanks for your contribution, Ancient brother. text का तो पता नहीं. At least what we are taught in on nuclear warfare when we did the JC course, staff college, senior command, there are ways of predicting. There are methods of calculating and predicting based on your what kind of foliage is there, what is the weather conditions there, which side the breeze is blowing, is there water in the air. So all that factors dal ke you can calculate and predict how much it is going to spread immediately, and over a period of time the residual radiation, how long will it take and where all it can go and to what level. So that predictions are being done. That is taught, very much taught. So I Hmm. ancient text का मेरे को पता नहीं. I haven't found any authentic sources of ancient texts. बस नाम हैं जो मिले हैं, ब्रह्मास्त्र and all these. I only know their names, Agniastra, Brahmastra, but Hmm. it is evident from, like, I had done a talk on research on Mohenjo-daro, and it is evident that our people at that time, about 2000 years ago, knew how to control a nuclear explosion in a particular direction, because what was written, हम तो गए नहीं थे. There is a English lord and a Italian who had gone there, who had done the research, and a Russian has also gone there. All three have concurred that in the central place of Mohenjo-daro, the kind of glazed bricks and other things that were found is found exactly like what was found in the ground zero of Hiroshima Nagasaki. But the difference was that in Nagasaki it was found all along. In Mohenjo-daro it was found only in a particular direction. Wow. Directed energy nuclear weapon. Yes, only in a particular direction. Call me crazy, but that might just happen in the future. Okay. And two, three things that I myself questioned. They found some skeletons which had very high radiation content even after 2000 years, mind you. Almost about, not 2000 years, I would say, yeah, about, yeah, 2000 plus years. It is about 1900 BC, so it is close to 3000 years. The radiation content in those bones were of the same level of radiation that was found in the human bodies in Hiroshima, Nagasaki. And this is 3000 years later. Huh? That was only a 20 kT. तो ये कितने kT का रहा होगा? And when you look at your authentic history timelines, there is a huge period of 2-3,000 years, 2000 years, where there is a gap in the northwest and north. कोई kingdoms नहीं थे वहां. Bones were found, they said. हमारे इतिहास में कहीं भी you don't bury the people, you cremate them. Burial होता है small babies and saints. आज भी babies and saints are buried, they are not cremated. Third होता है somebody who has got such a bad virus or infection that by burning it, the smoke will spread the infection, like radiation है उसमें. उन लोगों को आप बरी करते हो. That is how you found bones not only there in आपके मोहनजोदारो, हरप्पा,
You found bones here in India in Kalibangan also. Skeletons. I'm not talking of bone, full skeleton. Which indicates these areas had an effect, some fallout, something कुछ हुआ है, हमें पता नहीं, क्योंकि हमको तो वो यही बताया दैवी अस्त्र है, क्या है we don't know. We've lost that technology. Vignesh Prabhuji, thank you so much. Good to see you at JD Summit. How can India tackle internal divisive things like caste census, reservation, etc.? This to cause more brain drain. That's what we were discussing in the last Maturity. question. It's by Exactly. maturity of the people to see through what the politicians are trying to do. Caste भी जब करते हैं, please remember, the other religious denominations also have their caste. So you want to do caste reservation, I'm okay by it, but then include all the other religious denomination. Are you trying to tell me Islam doesn't have? Are you trying to tell me Christianity doesn't have? Are you trying to tell me Sikhism doesn't have? Everything has. So why caste denomination only for the Sanatan Dharmis? Have a caste census for them also ना. वो क्यों बोल रहे हो उसको केवल कि आप इस्लाम लिख दिए तो दूसरा लिखने की जरूरत नहीं है? नहीं, आप लिखो ना आपका कास्ट डिनोमिनेशन उसमें, फिर पता चलेगा आपको कितना डीप डिवाइसिव है इस्लाम भी. गुमनामी बाबा, थैंक यू सो मच. क्रिश्चियन भी, हाँ, एवरीवन सर, सारे ही हैं उसमें, तो everyone एक has दूसरे के very गले deep काटते हैं. division, तो उनका भी कास्ट सेंसस करो, फिर पता लगेगा आपको. बहुत बहुत बधाइयाँ. थैंक यू सो मच. Gulleen Singh, thank you so much, brother. He says, Jai Hind, appreciate you and admire both of you. Just want to ask, Israel going to end this war soon, or if other countries might participate? गुरलीन सिंह जी, like I said, अगले 5-7 दिन के अंदर लड़ाई जो है, एक्चुअल फाइट, वो खत्म हो जाएगा. The war doesn't end. The fighting ends. Just fighting itself is not war. Then the diplomatic war starts, like I mentioned there. 2 states, yes. Palestine, yes. Location of Palestine, where? Because जो जगह आपने बना के दी थी गाजा और वेस्ट बैंक, वो तो अरब्स हैव रेगुलरली नॉट एक्सेप्टेड दैट. ठीक है, तो अब बता दो कहाँ जानना चाहते हो. I have my views. I'll express it sometime. क्या कर सकते हैं? I've discussed it with Aadi. Poonam Sarafji, thank you so much for your contribution. And once again, thank you so much for your contribution. Manvendra Singh ji, thank you so much for your contribution. Harish Kumar ji, thank you so much. He says, congrats, Adi. Just a suggestion. You also present detailed presentations on the danger for left ideologies in education campuses and cinemas. We do cover that, but not as a specific subject. Huh? When you had Bipindra here on China's influence warfare, it was covered in that. See, सिनेमा का आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, जैसे आपके फैमिली को किस तरह से तोड़ा. ठीक है, मेरे 65 साल हो गए, अभी कुछ महीनों में मैं 66 साल का हो जाऊंगा. I can tell you about films starting from the 60s, 1960s till date. 1960s theme was twofold, or rather threefold. A, joint family is pathetic. So you always had films where in the joint family you had fighting and you had each one cutting the other, और बड़े भाई का वो 80s तक चलता गया, to show that joint family doesn't work. I don't say the joint family doesn't have its ills, but joint family उतना खराब भी नहीं होता. It is a tremendous pressure absorber, tension absorber. That is number one. Number two was गांव में your मुखिया, जमींदार, मुंशी were all lechers. Is it like that? Number three, all your frauds were Hindu sadhus. कभी भी आप देखो कहीं चोरी चकाट करने जा रहा है तो वो प्रीस्ट बन के नहीं जाएगा, मौलवी बन के नहीं जाएगा, वो साधु बन के जाएगा.
That has been your target to break your संस्कृति. वहां से निकलते निकलते आपके अपने फैमिली के अंदर फादर और बच्चे और उनकी लड़ाइयां शुरू हो गई, और अब एड्स में दिखा रहे हैं बच्चे बड़ों को सिखाने वाले कि ये खराब है, वो खराब है. आपके टूथब्रश के ऐड में फादर कुछ कर रहा है, बच्ची आके बता रही है 5-7 साल की, स्टॉप, यू आर डूइंग रॉन्ग, ये गलत है, ये सारा कचरा आपके मुंह में जा रहा है, टूथब्रश करके आप. What are you doing to your family? You're trying to break the damn family. This is what Bollywood is. So, average middle class gamer. Thank you so much, sir. Christian Bible Belt in US, which are normally right wing, are super anti-Semitics, generational. Right now, they are in the closet, but some are very overt. My God, that's a heavy question, brother. This is supposed to be a lighter show. Yeah, But yeah, you're I have right, known a actually. lot of Americans who are Christians and Bible Belt. I didn't find them anti-Semitic. Yeah, I They are mean, totally but pro-Israelis. आजकल थोड़ा सा ज्यादा निकल रहा है सर anti-Semitism. There is no question. Anti-Semitism तो because आपके cesspools है ना, Harvard, Stanford, ये all these are your cesspools of वो लेफ्टिज्म वो बोलते हैं, मैं एक्सट्रीम लेफ्टिज्म बोलता हूँ, which are anti-Semitic. So it's not a question of whether you are following the Bible or not following the Bible. It's a question of are SG, you leftist? SG, thank you so much. Namaste, Rajiv sir and Aadi sir. Congratulations on 1 lakh. Thank you so much. You guys have made geopolitics topics interesting and easy to understand for all of us. Thank you Thank so you, much. sir. Vishwajit Singh, thank you so much. He says, Namaskar. At least them seem to be tied up with China, and the same group seems to finger India. Is India risking a lot in partnering with the US? Why do we not have faith in our diplomacy? You think our diplomats don't know who is Victoria Nuland and what are they trying? भरोसा रखो यार. That is why I say they have become mature decision makers and others. Let us also have faith on them यार. Yes, they अंदर रह के उसको सुधार के ठीक के बाहर फेंकोगे कि बाहर रह के तुम लड़ाई करना चाहते हो उनसे, and allow them to seep in more and more space. So, Abhinav ji, thank you so much. He says, just regards. I was earlier joiner of this channel. Thanks, Adi and Pranam sir, for helping us. Thank you. Thank you, Anubhav. सोनी सिंह जी सर, क्या भारत को वापस वर्ना व्यवस्था में ले जाना पॉसिबल है? इफ यस, हाउ? समय लगेगा. See, this is what you have been taught in your school. Thanks to Macaulay. Macaulay ने तो 1830s में बना दिया था, but actual implementation happened after the Crown took over after the first Battle of Independence. 1860s, 1870 में लागू हुआ था. तो अगर 1870 भी लेते हैं तो 150 साल से ऊपर हो गए, आपको यही पढ़ाया जा रहा है. Now you have to start changing and start teaching and start shifting. इसीलिए मैं कहता हूं कि पैन इंडिया, मेक संस्कृत एज योर मदर मेन लैंग्वेज ऑफ इंडिया फॉर कनेक्टिविटी एंड टीच योर मदर टंग. संस्कृत क्यों? क्योंकि आपके जितने भी शास्त्र, संहिता, स्मृति, जो कुछ लिखा हुआ है सब संस्कृत में. हम आज उसको पढ़ते हैं जो कोई बाहर वाला उसको ट्रांसलेट करके हमें दे रहा है. आपको संस्कृत आता है तो आप समझ जाओगे. आप समझ जाओगे तो अंग्रेजी में जो लिखा है कि वर्ण मतलब बाय बर्थ है, कास्ट है, आप उसको क्वेश्चन करोगे, क्योंकि वर्ण का वो मतलब नहीं होता है. वर्ण का मतलब होता है आपकी काबिलियत के मुताबिक. तो जब तक ये आपके अंदर से ये मेच्योरिटी क्वेश्चन करने के लिए नहीं आएगा ना, बिकॉज वहां पे जयपुर डायलॉग में स्वरूप संपत जी ने भी एक बहुत अहम चीज कही थी कि स्कूल में हम बाय रोट करते हैं, ये सिखाना भूल गए हैं टू क्वेश्चन व्हाई. जब हम ये व्हाई पूछना शुरू करेंगे ना, तब ये सिस्टम बदलना शुरू हो जाएगा. और धीरे धीरे, लाइक आई सेड, ये आप अभी ये कदम लोगे, जो ये मैं अभी कदम ले रहा हूं, भारत, भारतीयता, संस्कृत, क्या मेरे जीवनी में हो जाएगा? शायद हो. लेकिन अगर ये पुश बढ़ते बढ़ते शुरू हो जाएगा तो शायद मेरे नाते नातियों को पता लग जाएगा कि ये है. क्योंकि एक मेरी बेटी है, पोते पोती तो है नहीं, तो नातिन को पता लगेगा कि क्या है.
So let us do something for the future generations of Bharat. Indik Gal, thank you so much. I hope you get to read Hindus and Hindu Rashtra book by Anand Ranganathan. I not just got the book, I got it autographed and I read it also. See, I am, हर एक की अपनी अपनी सोच है. I don't like the word Hindu or Hindu Rashtra because the outsiders have given us. Outsiders have given us who? It starts with the Greeks. हमारा जो इंदस है उसका नाम सिंधु, सिंधु नदी. स शब्द ग्रीक्स में नहीं था. तो जो भी सिंधु नदी के परे थे उनको वो हिंदूस कहते थे. It was not based on religion. All people, and at that time you had Buddhists, you had Jains also. क्रिश्चियनिटी तब आया नहीं था जब ग्रीक्स के टाइम में, बाद में आया था. सो दैट वाज द नेम फॉर द हिंदूज. हमारा जो नाम है हमारे देश का भारत है और हम भारतीय हैं, तो हम हिंदू राष्ट्र क्यों बोल रहे हैं? हमें भारतवर्ष बोलना चाहिए या भारतीय राष्ट्र बोलना चाहिए, और हिंदू नहीं, भारत, भारतीय बोलना चाहिए. ये मेरी सोच है, आनंद जी की अपनी सोच है. Research and analysis wing, thank you so much once again. Rajiv sir, आप अपने कभी टैंक वाले किस्से बताएं, so interested बहुत to है know. यार, बहुत है. That's something we will. That is आराम से चाय कॉफी पी के गप्पे मारने. नहीं, एक एक शो मेरे को करना है, बड़े सारे किस्से निकालने हैं आप लोगों से, सबसे मेरे को. विघ्नेश जी, थैंक यू सो मच. FIN Karnataka Lingayats bury the body. Yes, they do. I didn't know that. Thank you. Shubham Agrawal, thank you so much for joining in. He says, sir, ये क्यों टीवी चैनल QTV जैसे चैनल उर्दू में चैनल पाकिस्तान के कैसे चलाते हैं? क्या उसे रेडिकलाइजेशन नहीं हो रही थी? मैं पाकिस्तान का कोई चैनल देखता ही नहीं हूँ, मैं क्या बताऊंगा आपको. मैं अपनी चैनल बहुत कम देखता हूँ. KSV Prasad ji, thank you so much. Rajiv Narayan Garu, should not there be a program wherein common people who feel responsible to contribute for financial means to our defense expenses? अभी वो मोदी जी ने शुरू किया है, बट पैसे हैं यार. There is something coming out from there. Yeah, but there is adequate money and funding available for defense expenses. Last 3 years, I used to prepare the financial analysis and what all would be needed and send it as a booklet to the PMO. Prioritize everything what is required, and they wanted, I used to do it actually for the all three services. जो मेरे काम का पारिकर जी बोलते थे कि नहीं आप मेरे से डिस्कस करो और बना के भेजो PMO को. तो I used to send booklets every quarter, actually every quarter to the PMO कि भाई this is the broad financial analysis of the military and what are the prioritizations, क्या क्या acquisitions, कितने पैसे जाने. एक चीज याद रख लो, जैसे अभी फर्ज कर लो एयरक्राफ्ट कैरियर आप या जहाज खरीद रहे हैं, जैसे अभी नेवी राफेल खरीदने वाला है फ्रांस से, और आपको बोला जाता है कि 55,000 करोड़ लगेगा. तो एक साथ नहीं देते हो 55,000 करोड़. वो अब क्योंकि वो सारे जहाज एक साथ तो बना के दे नहीं सकता. फैक्ट्री की एक एबिलिटी है, उसमें भी उसने अपने खुद के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है और जो जहाज उसको चाहिए वो बनाने हैं, और उसके अलावा आपको बना के देना. तो इनिशियल जैसे हम करते हैं ना घर के लिए, जैसे घर बनता है, सारा घर का पैसा तो नहीं देते हो ना आप एक साथ. आप पहले एक बुकिंग अमाउंट देते हो, फिर उसके बाद जैसे जैसे बनते जाता है घर आप पैसे देते जाते हो. तो उसी तरह एक कैरी ओवर लायबिलिटी होता है कि आपने ये दे दिया बुकिंग अमाउंट, और जैसे जैसे हर 1-2 साल में कुछ लॉट आ गए तो वो आप उनको पैसे देते हो. इसको हम कमिटेड लायबिलिटी बोलते हैं. सो it is not that you're going to pay 55,000 crores at the drop of a hat. It is paid over a period of time. Same when you're going to make an aircraft carrier, it takes 10 years. तो अगर उन्होंने बोला कि एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए मुझे 40,000 करोड़ चाहिए, तो वो 40,000 करोड़ एक साथ थोड़ी देते हो. वो उसका करेगा क्या? जैसे जैसे बनते जाएगा, जैसे जैसे सिस्टम्स उसमें लगते जाएंगे, उसको वो
in various tranches specimen. So, It takes every 2 years or something. Abhijit Somanji, Hadi, off bit off track, but could not resist asking, can you please ask sir if he's a follower of Maha Avatar Babaji? I saw the book in one of his podcasts and even read and follow. That's why I asked. There you go. I think you got your answer. I read everything. Anything Puraze. spiritual, anything about their life, I read everything. I also have autobiography of a yogi written by one of his followers, Paramhans Yoganand. उधर से इनके बारे में पता चला, ये वो पढ़ा है. Then Swami Ram का किताब है, Living with the Himalayan Masters. That's how you get to know what our Sanatan Dharma is all about. Burez Yeah, Batiwala. he comes. His dad is ex-Air Force. Okay, you promised to give out your story on 100K show. Why did you start Dev Talks and what do you do? Well, I have a full-time job. I'm a hotelier by profession. I started this because I was damn pissed off by the way our media does stuff. So I said, "Chalo, kuch karte hain." And one of the biggest things that I saw and I realized was हमारे इतने veterans हैं, इतने सारी knowledge है पूरी देश के अंदर, उसको कोई use नहीं करता है ढंग से. अब as per work and this and that, I am not that aware कि but जो उनके दिमागों के अंदर है, at least वो तो बाहर निकले. क्योंकि जो आवाजें बाहर निकलती थी वो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी आवाजें होती थी. It was not something that were the right voices. So I said यार कुछ करना है इसके लिए. एंड वहां से इंटरव्यू शुरू करे, चीजें चलती गई और स्टोरी यहाँ पर है आपके सामने. इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरे को खुद इतना पीछे देख के लगता है कि यार ऑलमोस्ट 1200 इंटरव्यूज है मेरे पास, you know, on various different subjects, this that 1200 videos, not interviews about 600 650, क्योंकि clips भी हैं, ये भी हैं, वो भी हैं. But when you look back, it's really amazing that the amount of work and amount of people that you've been associated with. Shubham Agrawal ji, this if we start explaining Myanmar, पूरी रात निकल जाएगी. We'll मैं plan another briefly show for बताता this. But thank you so much, Hanji sir. Please. हूँ. Brief बताता हूँ. See, to understand North Myanmar, what is happening is in North Myanmar. यूनान से 3 सड़क निकल के आते हैं जिससे पूरा ट्रेड जो चाइना का नॉर्थ म्यांमार और म्यांमार में जाता है. सो कुनमिंग नॉर्थ मोस्ट रोड, कुनमिंग, डाली, बाओशान, एंड देन कम्स टू मूसे, रुएली एंड इनटू अपना नॉर्थ म्यांमार, द इनफेमस रुएली वेयर ऑल आर वैली बेस्ड मिलिटेंट सब मिलिटेंट्स के ऑफिस है, जहां से पूरा गन रनिंग होता है, उनको वेपन्स इक्विपमेंट सब सप्लाई होता है, which is there. And it comes to a place, रुइली से निकल के it comes to a place called मूसे. मूसे के नेक्स्ट म्यांमार में भामो. नेक्स्ट एक सड़क आता है कुनमिंग से निकल के यूशी करके जगह. यूशी से वो 2 रास्ते में फटता है. एक आता है चिनश्वे हान और दूसरा जाता है मोंगला. तो सदर्न मोस्ट मोंगला, चिनश्वे हान एंड मूसे. अभी हुआ क्या? नॉर्थ म्यांमार, चिनश्वे हान विच इज एंड मूसे, दीज आर शान एरियाज. तो ए ग्रुप ऑफ इस नॉर्थ म्यांमार में मिलिटेंट्स हैव फॉर्म्ड ए जॉइंट ऑपरेशनल ग्रुप. तो जो शान का है इट इज कॉल्ड द ब्रदरहुड अलायंस. उसमें है सबसे बड़ा म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक आर्मी और साथ उसके है ताआन नेशनल लिबरेशन आर्मी एंड अराकान नेशनल Arakan army, the ones who were fighting the Rohingyas. Okay, they are not the Rohingyas. They were fighting the Rohingyas for the Hindus. Rohingyas had massacred a lot of Hindus there. वहां से निकल के आए. Led by Myanmar National Democratic Army. They have captured Chin Shui Han. $1.8 billion annual trade travels along these 3 axes. So one axis for support of militant organizations anti-India in North Myanmar has been blocked, Chinshe Huan. Further towards the west, Sagaing province hai, which is opposite India.
जहां पे आपके सारे मिलिटेंट ग्रुप्स के हाइड आउट्स हैं एंड दे गो टूवर्ड्स अपना रुईली। वहां पे एक वेरी की डिस्ट्रिक्ट है कावलिंग, दैट डिस्ट्रिक्ट हैज बीन कैप्चर्ड बाय दिस मिलिटेंट्स। ठीक है, यहाँ पे है काचिन इंडिपेंडेंट आर्मी, अराकान आर्मी एंड कावलिन्स पीपल्स डिफेंस फोर्सेस। नाउ डर चाइना को इसलिए लगा है कि यहां से डायरेक्ट रोड है 200 किलोमीटर स्ट्रेट रोड एंड देयर इज नो म्यांमारीज आर्मी आउट देयर, स्ट्रेट रोड टू मूसे। यहां से निकलेगा, कोई रोक टोक नहीं है, मूसे पे कब्जा कर लेगा। ये दो ब्लॉक हो गए ना, तो जो मणिपुर को इतना एसेस कर रहा है वो सब बंद हो जाएगा। दैट इज वाई चाइना इज थ्री। ठीक है, Arin, thank you so much. He says, ट्रस्ट किया करो। I'm sorry, sir. I would like to respectfully disagree. Hindu is not a Greek word. They had Sa in their language, and I would rather refer a book you called Hindutva by Arvind Neelakandan. It has an interesting take in the same. दे हैव सा, स नहीं, सा। स होगा तो सिंधु होगा, सा होगा तो सैंधु होगा। दैट्स माय टेक। Thank you so much for your contribution. Kunal Sharma ji, thank you so much. So, what are your thoughts on Albert Pike and he said three wars in his letter to the secret society? Yeah. कुणाल जी, डू यू थिंक थर्ड वर्ल्ड वॉर हो नहीं रहा है? It's सब already तरफ तो happening. लड़ाई हो रही है यार, सारे देशों की वाट लगी हुई है एक्सेप्ट इंडिया, सब तरफ लड़ाई छिड़ी हुई है। सो और छिड़ी हुई है और कोई छेड़ना चाहता है अपने ईस्टर्न सीबोर्ड के ऊपर, तो जी. सब तो हो ही रहा है यार। JBJP, thank you so much. General sir, awesome on रक्षा का द्वितीय दायित्व किसका? दायित्व जेडी किसका में। जेडी में. थैंक यू। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया उस वर्ड में. आदि आर्यन जी, थैंक यू सो मच. हाउ डू यू गेट इन टच विद यू प्राइवेटली? देयर समथिंग इन माय माइंड I don't want to tell in public or over email. Well, you'll have to write an email for us to get in touch further. So start with that. Kafir Krish ji, thank you so much. Congrats Adi bhai and Pranav Rajiv ji. Keep us all blessed. And most importantly, making common youth of Bharat aware of geopolitics and consensus geopolitics too. Thank you so much. Research and analysis wing, once more, thank you. He says, sir, why do we have satellite states that Nepal and Sri Lanka and Bhutan? It's not like they give diplomatic heft like the US satellite states. यार ये है स्टेट्स, as you grow big and you have a lot more to offer to them, Bhutan is with you 2000%। उनके पार्लियामेंट जो भी बोल दे, द पब्लिक एंड द किंग आर विद यू। अभी Oh, that बातचीत हुई है, प्राइम मिनिस्टर थोड़ा ओवर स्मार्ट बनता है होगा वापस. बातचीत हो गई है वहां पे। द किंग हैज इमीडिएटली कम टू हैव डिस्कशंस विद इंडिया। So, क्या करना है, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। ओके, नेपाल इज इन अ फ्लक्स एट द मोमेंट, फंसे हुए हैं, आम जनता रो भी रही है, कहाँ जाएं, क्या करें। एज यू इंक्रीज योर हेफ्ट and as you become stronger, then automatically all these will start joining up with you and feeling that there is benefit in being with you. You're comparing us to USA. Well, USA is a global power. You are rising up to become a regional power and you are wanting to compare with US. But US का खुद का देख लो यार. Does he, except for Canada, does he have any state with him today? Central America is not with him. Caribbeans, so most of them look towards UK. They are still dominions. They don't have their own constitution. So my feeling is once you become strong, and as a prime minister has said, Vasudhaiva Kutumbakam, Sagar, when people realize the benefits, like abhi dekho, Sri Lanka is realizing your benefits. USA has joined up. Already India and Japan were there. USA has joined up, and slowly you're going to take over the Colombo port. China को वो भी डर है अभी। जब उनको पता लगता है कि इनके साथ जाने में मेरे लोगों को बेनिफिट होगा, ऑटोमेटिकली वो आएगा। तब तक यू हैव टू बी केयरफुल।
Bharti from the south, it's our achievement. We need to spread more. It's just the first hurdle. It's our achievement. Thank you so much for saying that. My brother's knowledge and analysis and hard work. Thank you, man. Thank you so much. It's our achievement as of this thing. दीपक जी, यहाँ पर शायद मैं एकमात्र आदिवासी हूँ, रांची झारखंड. Oh, नमस्कार. pleasure meeting you. All this said, it wouldn't be taught at school level. हो रहा है. अब लेट अस सी व्हेन द न्यू एजुकेशन प्रोग्राम गेट्स इम्प्लीमेंटेड. उस पे तो बातचीत अभी भी चल रही है और तलवारें निकलेंगी ये उसमें, बिकॉज यू आर ये वांटिंग टू ब्रिंग इन द इंडियन नॉलेज सिस्टम इन दैट. ये सवाल बहुत पूछा जाता है आपसे सर, कमेंट्स में काफी ये होता है मेरा सर के मैप पीछे. नहीं है पैक्सटन जी, ये मेरा मैप नहीं है. ये मैं एक इवेंट के लिए गया था. आई वाज इनवाइटेड टू द मद्रास यूनिवर्सिटी टू गिव अ टॉक. सो द चिल्ड्रन देयर हैड डिवाइस्ड दिस मैप विद द मैप ऑफ इंडिया. आप केवल चीन का मैप नहीं देखो, उसके साथ मैप ऑफ इंडिया है, विद अ फुल मैप ऑफ इंडिया, विद फुल JNK, एक्साई चीन इंक्लूडिंग पार्ट ऑफ इंडिया. सो सिंस उन्होंने इतने मेहनत से और बच्चों ने मेरे को दिया, वहां के यूनिवर्सिटी के बच्चों ने, I decided to keep it here, that the kids have felt that I did a good job and they gave me this. या भाई धर्म आए मैं क्षत्रिय यार, मैं तो सोल्जर हूँ. What history book should we buy for our future generations? अब मैं क्या बताऊंगा बच्चों को. तो पहले NCERT का तो पढ़ना है, फिर थोड़ा थोड़ा अपना अमर चित्र कथा पढ़ो, फिर अपने एक्चुअल जो आपके इतिहास लिखे हैं. इसलिए कहता हूँ संस्कृत. जैसे आई हैव स्टिल द फुल 8 कैसेट्स विच स्वर्गीय मुकेश जी हैज संग द कंप्लीट रामचरितमानस. ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, and that is 8 cassette, both sides, complete Ramcharitmanas. It's in Sanskrit. So अब ये तुलसीदास जी का है जो उन्होंने गाया है, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया. बट दैट इज व्हाई आई वांट people to start learning Sanskrit. हमारे टाइम में 9th क्लास तक संस्कृत was there. We studied. 11th was the only board. 9th Even me, class sir. तक we used to study Sanskrit. Even me. 9th क्लास के बाद बंद होता था. एंड a lot of us used to ask them कि भाई 9th क्लास के बाद क्यों बंद कर रहे हो, 11th तक ले जाओ ना. So we should implement. It is feasible to start implementing Sanskrit. 10th बोर्ड तक तो ले जाओ. Indeed, sir. पंगा पुट्ठा पै गया चीन के लिए, जनरल सर हमास वाला. हाँ जी. बहुत पंगा जी पुट्ठा से. पै गया. टोटल बिल्कुल सही. अब उन्हें किस चारों को समझ नहीं आ रहा की करें. करें क्या? Alpha Jam, thank you so much, sir. Will you read the original address by AS? AS. I'm not sure what you are hinting to. Let me see. I haven't heard of this. Yeah, Okay. Mignesh Prabhu, Myanmar event, is India behind it? Unknown people. Unknown gunmen. Ming Wu is also asking, why does General Rajiv have Chinese Mac in the background? Because we love you guys, yeah. Come on. You're our best friends in the whole world. Devi Guru Prasad, thank you so much, brother. He says, General sir, I heard Swami Vivekananda was promoted by some deep state faction in the US. Can we use it to counter the current establishment? Why not? Start with his speech which he gave in the Congress of Religions. I want to get, yeah, why is General Rajiv has Chinese map in the background? That's what I was saying. Because we love you guys. You're the best people in the whole world. Gifted it by the kids यार. उन्होंने खुद बैठ के डिजाइन किया. I was told they have designed it and done everything. Run after draft बना के उसके पीछे correction सब करके उन्होंने दिया है. So I keep it as a symbol of the love of the college students who had called me. Indy Gal, thank you so much. US trying to for regime change in Bangladesh, right? Either that or they're just fingering her quite hard. They're troubling her quite a bit, but it's a dangerous scenario. That other guy is terrible.
Kafir Krish, thank you so much. In today's world war is on. Question that are you seeing it in the right direction or not? Guys, kindly hit the like button. Most important. काफिर क्रिश, यस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना। हमारा ये सोच है आम आदमी का, वॉर मतलब गुत्तम गुत्ती लड़ाई नहीं। when I start an economic war, when I start economic coercion, when I start interfering in your internal affairs, when I start narrative warfares with you, these are all wars. Kautilya, Chanakya, in his Arthashastra, has called these as Tushnim warfare, silent warfare, as Yeah. part of Kootaniti. हम अपने चाणक्य को भूल जाते हैं, संजू संजू बोलते रहते हैं। Harini Prasanna, thank you so much. People say Jacinda Ardern was a WEF stooge. What did she do that made the deep state kick her out of power? Deep The state deep themselves state are no going to be longer out of power. needs the extreme leftists. They have shifted focus to India. तो जो छोटे मोटे नॉन एंटिटीज हैं वो सब चले गए। एंगेला मर्केल ऑल्सो बूटेड आउट, यहाँ से जैसिंडा आर्सन ऑल्सो बूटेड आउट। जर्मनी हैज होप्स की यार किसी जमाने में वर्ल्ड वॉर 1-2 में वो ताकत था, आज क्या है यार? इफ ही फेसेस वॉर, 12 टैंक खड़ा करने के लिए मुश्किल होगा उसको। 5 जहाज उड़ा दे फाइटर 8 वो बहुत है। 18 आर्टिलरी गन लेके आ जाए वह बहुत है। लड़ाई लड़ोगे उसके साथ? वो तो पुलिस फौज आके उसको थप्पड़ मार के चली जाएगी। राहुल चैटर्जी That जी, is where थैंक यू सो Germany is मच। today. ये जर्मनी की तो बहुत बुरे हाल है सर। Yeah, and they Vignesh are Prabhu, facing recession. yeah, thanks once again. He's saying Aditya Satsangi, that guy who launched the book, I remember. Okay, I I didn't. I missed that. I'll see if I can get it. I'll try and read it. It's not available in India as of now. Shubham Agarwal, congratulations, sir, and Adiji. I met you both in Jaipur Dialogues. Yes. Thank you. Pleasure meeting you there. Adinath, thank you so much once again. He says, can China become a democracy after Z? बन जाएगा तो Yikes. भी क्या होगा? Let me tell you, I am not a votary of Thailand. ये जो South Tibet 9- line, which used to be 11- line, all this was brought out by who? Chiang Kai-shek of the KMT, Republic of China, which is Taiwan. Has Taiwan even till date, India बोलता रहता है, have they revoked that and say that in their parliament and say that we cancel all this, we don't believe in this? They haven't. So how do you think even if it becomes a democracy and say it becomes a republic and the Taiwanese go back there, they'll have a change of heart? चेंज ऑफ हार्ट होना है तो वो दिखाना है ना पहले कि जो जो चीजें पहले कर गए थे वो सब हम कैंसिल कर रहे हैं। Who said that there cannot be two suns in the sky? Chiang Kai-shek, not Mao. It was Chiang Kai-shek who said that. तो अब अने ठीक है, अच्छी बात है, their people will do well, but is it going to change any ground situation against us? Who insisted on the claims on Taiwan, on Tawang? Chiang Kai-shek, Republic of China. एक चीज भी उन्होंने आज तक रिवोक किया अपने पार्लियामेंट में? नहीं। तो डोंट गेट कैरिड अवे कि यार डेमोक्रेसी हो जाएगा या ताइवान आ जाएगा, थिंग्स ऑन ग्राउंड विल चेंज। कुड चेंज देन, आई डोंट नो, बट एज इट स्टैंड्स आई हैव माय सीरियस डाउट्स। बट जस्ट टू फिंगर चाइना अच्छा है कि ताइवान के साथ रिलेशंस करते हो, टू फिंगर देम। Well done. Love your in the face, upfront, honest approach. Thank you. Enough of trying to be diplomatically correct and hogging the fence. Today's Bharat says the way it is best. Thank you so much. Major General Sir, please accept a deep gratitude for all you have done for the country and clearly continuing to do. Thank you, Chatterjee sir. Aadi and Bharji, Aadi and General Saab, especially the Deaf Talks, all the guests are specialists who are very calm and speak
with a calm voice. Good to listen, unlike the cacophony of the Indian TV news. बट दी Yeah. वो जो कैकोफनी शुरू हुआ ना वहां पे, द चैंपियन ऑफ दैट इज द वन जिसका कॉम्प्लीमेंट इसको मिल रहा था, अरविंद गोस्वामी, अर्नब गोस्वामी, उसने शुरू किया. He started with Times Now, went into Republic, and now everybody is just shouting. But funnily speaking, And not even their only the Western media, anchor, even the people are shouting. Who their come Western media channels also that do that. If you see Piers Morgan, उसके there? debates 5 बंदे बैठे होंगे चिल्ला रहे हैं एक दूसरे के ऊपर भैंस के. Raghu H, thank you so much. He says, why can't we why cannot we have an agreement with Bhutan and Bangladesh and Tibet to provide their security by Indian forces to counter China? Bhutan, you are. Bhutan, we already are. And it's a very deep relationship with Bhutan. Nepal is an independent country, so it's ताली दो हाथ से बजती है. Tibet, you had a chance. If in 1950, if you had sent a division worth of troops to assist the Khampa brigades that were there, who were the fighting force of the Tibetans, you would have defeated the Chinese. And Tibet would have stayed independent. You didn't do it. अभी तो it's lot of water down the Ganga यार. Yeah. Tibet तो पहले अब free होना है, उसके बाद देखेंगे. Interesting question. Adi, when are you going to invite unknown gunmen on the show? He's already here. या बिल्कुल, हम सबके पीछे बैठा है. मैं ओपन में अनाउंस करा यार भाई, मैं देखो जब तक मैं जयपुर डायलॉग में था कोई नहीं जाएगा. अब आपको कहाँ पता मैं कहाँ बैठा हूँ. बांग्लादेश का बोला है. बांग्लादेश has no direct threat from China. Yeah. It doesn't have any borders with China. It has one border is maritime, and the complete land border is with India only. छोटा सा हिस्सा है उसका म्यांमार के साथ. Rest everything is with India. Mohit says, don't lie, Adi, it's me. चल ठीक है, it's you. The more the merrier, Mohit ji. The more the merrier. यार, we can't be everywhere, you know. It's like duplicates. पुतिन के जैसे है ना 25-30. मेरे भी हैं बहुत सारे. Nature's Digest. Kerala today banning bursting of firecrackers. Your view? Amazing, fantastic, beautiful. The Supreme Court has only banned those firecrackers which have barium. I couldn't have heard a most idiotic decision by the Supreme Court. How the hell are you going to find out when I burst a cracker whether barium was there or not? No, the Chief Justice and all these guys will come with the कैसे पता उनको कि उसमें barium था या नहीं था? Or the only answer to this is my personal request to all Bharatiyas, stroke Hindus, कम पूरे जोर शोर से और चला दो पटाखे, सब तरफ चला दो, देखते हैं कौन क्या कर सकता है. You know the deal is, sir. I personally don't like crackers. I'll just add one, Aadi. In Delhi, understanding that there's going to be this ban, Gurgaon, Faridabad, Noida, Delhi में they started selling their firecrackers in August itself. By September सब firecrackers खरीद चुके थे. Sir, मेरे को personally नहीं पसंद, ठीक है. I find them to be too loud. Personally नहीं पसंद. But जब ये करते हैं ना, मैं जाके बजाता हूँ फिर. अगले दिन, you know, my throat is a bit very sensitive. उसके smoke जाके ना, अगले दिन पूरा सूजा होता है. 3 days I want people to talk, but last time इन लोगों ने करा था, I went and did it and my throat was swollen up, but fair enough. I'll give you an advice. Adi, I'll give you an advice. Damp your hanky and tie it around your nose. मैं तो N95 के पहन के जाऊंगा. डैम्प बेस्ट इज. हैंकी को डैम्प कर दो, गीला कर दो और बांध दो और जाके फोड़ दो, कुछ नहीं होगा. Sir, Devi Guru Prasad ji, thank you so much. Adi sir, can you spend a few minutes you was explaining about deep state faction and what faction who supported Swami Vivekananda? It will take a long time यार, थोड़ा और रिसर्च हमें करने दो देवी गुरु प्रसाद जी. And दूसरा मरवाओगे क्या यार? सतीश पाल जी, हमसे नाराज हो जाएगा कि बार-बार हमारे पीछे पड़ गए हाथ दो. I was the only guy in the country that started talking about it. Now तो deep state ऐसे हमारे चैनल पे पहला आया था. आपने और हमने एक पहला शो किया था where we hinted it.
Then you did one with P Gurus. I did one with Sanjay Dikshit. Then we came back to the channel and created the final structure. वो Structure. पूरा, so you know it. अब तो ऑल ओवर द ग्लोब चला गया, सब ग्लोबल डीप स्टेट बात करने शुरू कर Everybody, दिए। सारे नाम का कम से कम क्रेडिट तो दे दो यार यहाँ पर. Satish Palji, thank you so much for your super sticker. He says, okay, I love your research and analysis of the world important issues. I'm in USA. Try not to miss your talk. Thank you so much. Good luck and God Thank you, bless. sir. Thank you very Thank you. much. Uh, We survive from the love and affection that we get from you all. no question about that, sir. Unsaid. Uh, General sir, when we discuss an issue, can we discuss ways and means to solve, react to the issue and take input from our rich history? Your view? Yeah. Yes, Batraji, you don't take the input from your history. You take lessons from that and adapt it to now. Because what हिस्ट्री में जो हुआ था वो सिचुएशन अलग था, आज आपको सिचुएशन थोड़ा अलग होगा. द एनवायरनमेंट विल बी डिफरेंट, सिचुएशन में बी सिमिलर बट द एनवायरनमेंट विल बी डिफरेंट. द एनवायरनमेंट देन वाज डिफरेंट. टेक लेसन फ्रॉम देयर. What all were the environmental facts that they took in to arrive at what to do, and then modify it, adapt it, and apply it here. Cut paste काम नहीं चले. जी. Adi, shows becoming about defense questions. Yeah, ठीक है. Light questions tonight. Tell us about your mom and dad reaction, how you built Dev Talks from scratch, the effort it took. Okay, I'll take a minute. Mom and dad were very happy. Of course, my dad is not in station right now. He's traveling. तो उनको तो बड़ा ही अच्छा लगा. He sent, as a matter of fact, सबसे one of the first messages that came from was him. उसके बाद mom was waiting outside. मेरे लिए आइसक्रीम लेके आई थी वो. Just as a मुंह मीठा sort of a thing. I love eating ice cream. मैं Indian खा नहीं सकता क्योंकि I'm lactose intolerant. But आइसक्रीम थोड़ी बहुत खा लेता हूँ, which my stomach tolerates. दूध की बनी हुई मिठाई दूसरी खा लिया तो खत्म. There's a big problem. Apart from that, यार बनाया स्क्रैच से. देखो यार, एफर्ट बहुत है. मैं आपको सही में चीज बताऊं, आई स्लीप जस्ट अबाउट 4 or 5 hours a day. अभी भी ये शो खत्म करके मैं कम से कम आधा पौना घंटा एक बारी थोड़ा देख लेता हूँ, कुछ हुआ तो नहीं, कहीं कहीं बॉम्ब बूम तो नहीं पड़ा. बिकॉज यू गॉट सच अ बिग लूप दैट यू नीड टू क्लोज. एंड प्लस आई वर्क ऑल्सो, तो मेरे को सारा दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है. तो आई टेल यू स्मॉल लिटिल थिंग. जब मेरे को कुछ दिखता है ना, मैं अपने आप को एसएमएस करता हूँ. मतलब आई सेंड दैट न्यूज आइटम फ्रॉम माई फोन टू माई लैपटॉप. जब मैं दोपहर में आता हूँ, आई ओपन ऑल दोस थिंग्स, दैट्स नॉर्मली अबाउट 30-35 टैब्स, एंड रीड थ्रू एवरीथिंग. एंड मेरे पास 5-10 प्रेजेंटेशन हमेशा खुली होती हैं. तो जो जहाँ का टॉपिक होता है उधर उधर पे इंफॉर्मेशन आई कीप पुटिंग अप, एंड देन आई कीप गोइंग थ्रू देम. कुछ कंप्लीट होता है, कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा और रिसर्च चाहिए, क्या चाहिए क्या चाहिए, एंड दैट्स हाउ द टॉपिक्स आर बिल्ट. So, for example, right now there are 4 topics that I'm doing research on. कुछ ना कुछ पढ़ते रहो. Bangladesh being one of them. So that is how it is. Effort is a lot, but trust you me, इतने सारे अच्छे अच्छे comments आते हैं. People write such nice things. That's what keeps you going. You know. Vinsri Tan, if I'm pronouncing your name correctly, would you like to share something about yourself? I just did. One strength and one weakness. Okay, that's interesting. I don't know the strength, honestly, but the weakness is that I'm sometimes short tempered. So I don't have any, you know, saying that, but वो भी थोड़ा कम हो गया है. थोड़ी दाढ़ी सफेद होनी शुरू हो गई, वो भी हवा निकलनी शुरू हो गई है. Strength, I'm not sure, honestly. That's one thing I'm very wary about when I say strength. But hard work, mostly. I don't have a degree, 12वीं I पास would हूँ. say your strength is the depth of your research. Thank you, sir. That's a big thing coming from you, sir. Trust you me, that made my day more than the 1 lakh. Because thank you so much. That's really touching. And that's So not rehearsed, guys. without that depth of research, you will not be able to talk the way you do when you do your solo shows. Thank you, sir. Uh, okay. Yeah. You are a hotelier. You do have flair for cooking as well. Cooking and cocktails as well. Both sides. Very interested in that game. You've worked in a kitchen for a long time.
बहुत काम करा है. And at the age of 17, let me just tell you, I was cleaning a bathroom for a Jet Airways crew back in the day in a hotel called Sheraton, New Delhi. 17th birthday. And my parents were down there and they said that आजा बेटा हो गया टाइम. 5 बज गए थे उस टाइम पे शाम को. मैं बोला आता हूँ यार, थोड़ा काम बना नहीं रहा, खत्म हो गई है जिंदगी. लाइफ इज ओवर होने वाली है जिंदगी में बहुत जोर से. Started working. Congrats, Adi sir, Major General Rai. Waiting for that IIT surprise. My God, sir, people are not going to spare you. मैं मजाक नहीं कर रहा. एक आपको बार छोड़ेंगे नहीं आ लोग. जाएगा खुल के सब कुछ, फिर बताएंगे क्या. But sir, let me just say this. I not just me. There's so many guys who appreciate आपने जिस direction में हमको सारा guide करा है. And yes, Zest Adi is a raw agent. CIA also, and part-time MI5, and sometimes I मोसाद. go, on daily calls मोसाद to एंड Mossad. मिलिटेट तो वो ऑल्सो. जब हाँ वो डेली डेली बुलाते हैं मेरे को, क्या बोलते हैं, पर डीएम देते हैं मेरे को. तो जब वहां पर अननोन गनमैन की चीज चाहिए होती है मैं चले जाता हूँ. आजकल वो खालिद मशाल के पीछे पड़ा हूँ मैं. So you know, most importantly यार, the I was telling sir ki that you've guided us into certain places, and one of the things that we've learned, I think all of us as a community will understand कि depth में जाने के बगैर कुछ कर नहीं सकते. I used to get a lot of comments, and अभी भी आते हैं लोग, यार keep your programs to 30 minutes, keep your programs to 30 minutes. आप ज्यादा मत करो, ज्यादा लंबा मत करो. But how do you explain stuff without going into depth, without taking time? वो मेरे को समझ नहीं आता है. एंड आई कीप डिबेटिंग विद माई सेल्फ. मैं पूछता रहता हूँ अपने आप को कि यार, जो मैं दोपहर में छोटे छोटे शोज करता हूँ, शुड आई नॉट टेक क्वेश्चंस इन दैट टाइम, सो एटलीस्ट जो लोग तंग होते हैं लंबे शोज देख के, एटलीस्ट वो भी देख पाए. आई डोंट नो, बिकॉज इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग. बट you know I don't know, most of the people seem to enjoy the long shows, so I keep it like that. But thank you so much, sir. You've been a guide, a mentor, and a guru, as I say it always, to guide us into this thing. And कभी सोचा नहीं था YouTube पे रिसर्च करेंगे लोग. यस. आज वो दिन आ गए हैं सर. द So I hope पावर this, ऑफ द सोशल मीडिया एंड ओटीटी, you can do yeah, a lot. It can go it's positive way, it can go the negative way also. It's the path you it's choose. crazy सर. आप देख लीजिए सर, टिकटॉक ने बाहर क्या करा है. आई एम अ फर्म बिलीवर, चाइनीज बहुत गेम खेल रहे हैं टिकटॉक के साथ वहां पर दुनिया में उल्टे सीधे काम करने के लिए. सो यू कैन इमेजिन व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ दिस चाइनीज प्लेटफॉर्म. और हम लोग कितने बचे हुए हैं क्योंकि हमने बैन कर रखा है. तो बीइंग जियोपॉलिटिकली अवेयर इज सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज आप कहीं ना कहीं पैसे लगा दोगे इन अ सिंकिंग इंडस्ट्री जहां का सप्लाई चेन कट हो रही है बिकॉज योर कंट्री इज इन प्रॉब्लम विद दैट प्लेस. So, there is so many things that you need to know about geopolitics just for your own life. आप देख लो, जब से ये वॉर शुरू हुई है यूक्रेन में, you've been paying more money for gas and petrol. सब्जियां महंगी हो गई हैं आपकी. जो onions used to be maximum महंगी 60, 70, 80. Nowadays is going to $105. It's crazy. I mean, so geopolitics does impact all of us, and it's important that we That is understand it. why we should learn from the big MNCs of the US and the West also. One of the most critical elements that they have is the strategic risk analysis wing. And they do that geopolitical assessment, जो पढ़ाते हैं, dime, pestle and all that, to identify every time periodically, to tell them which way the country where they have gone in or they are wanting to go in, which way that country is going. Should you go in? Should you not go in? What should you do? वो Absolutely. अलग बात है कि कुछ एक एमएनसी सोचते हैं कि भाई आई कैन चेंज गवर्नमेंट्स ऑल्सो. वो अलग है, अफ्रीका में काफी होता था. बट it tells you how important, like you said, just to underline what you said, the importance of understanding geopolitics. You feel left out, sir.
Otherwise things are not going to go. And trust you me, हम लोग वो पहले होते थे ना, बाकी देखेंगे यार, वो गवर्नमेंट वालों का काम है ना भाई. सिक्योरिटी एंड द पोजीशन ऑफ भारत इज ऑल ऑफ आवर जॉब. क्योंकि हम लोग अगर स्ट्रांग होंगे, देयर इज नो वे एनी पावर इन द वर्ल्ड कैन इवन टच अस यार, लीव अलोन स्टॉप. देखो, आई एग्री टू वन एक्सटेंट. जो टंग शाओपिंग ने कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर बोला था, चौथा वर्टिकल लाया था मैन पावर, ह्यूमन मैन रिसोर्स. पावर का. बिकॉज जो आपकी इकोनॉमी है, जो आपकी डिप्लोमेसी है, जो आपकी मिलिट्री है, everything rests on the manpower. If the manpower is not with you, it's not working for the country, your economy, your diplomacy, and your military collapses. It will not work. Yeah. So, are you in touch with the KGB? Yeah, when they pay me, I go there. I'm freelancing super agent, yaar. James Bond, तो my doggy's name is James Bond, so you can imagine who I am. I'm जो just उसका kidding. जोक था ना, डॉगी तुमने बोला था, तो बार में वो बैठा हुआ है जेम्स बॉन्ड नेक्स्ट टू अ लैब्राडोर. बोलता है आई एम बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड. कुत्ता बोलता है आई एम डॉर, लैब्राडोर. तो वही हालत है सर. And on that note, Vishnujit Singh, thank you so much. Your channel is my de facto source of information to understand current affairs. Thank you so much, sir. Thank you. मैंने आपको रात को आज जगा के रखा, but trust you me, this was नहीं, needed, कोई बात and नहीं all of us have really यार. enjoyed the session. Trust me. 100K हो गए. हाउ कुड आई अवॉइड कमिंग टू योर 100K शो? नहीं, 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 sir. Thank you so much. Yes, yes. Jai All the Hind, best, Jai Bharat. and hope you Thank you. reach 500,000 and 5 million in good time. Thank you, sir. Thank you. Thanks, All the best. guys. Good night. Good night. Jai Bharatam.